Good morning all. We will continue our previous video. ओके सो पहला हम देखेंगे लिनक्स में से यूज़र कैसे डिलीट किया जाता है एंड उसका होम डायरेक्टरी एज वेल एज मेलिंग डायरेक्टरी कैसे डिलीट कर सकते हैं हम लोग. सो उसको डिलीट करने के लिए यूज़र डेल कमांड यूज़ किया जाता है. इफ़ वी वांट टू डिलीट द होम डायरेक्टरी एज वेल एज मेलिंग डायरेक्टरी तो हम -r ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ इट. User add, so first we will add the user, then we will delete the user add. We are using -d option to create a user home directory. User Amit -m for user Amit user. Okay, so we have created the user as well as its home directory, so we can cat the user. Yeah, you can see the user is present. Okay. Now we want to delete the user using user del command. Okay, so user del command delete कर सकते हैं. User del user Amit. Okay, so it will delete the user but it will not delete its home directory. So let's check if the home directory is deleted. So no, the home directory is still present. Okay, so before doing the user del command we need to specify the user -r option. यूज़र के साथ उसका होम डायरेक्टरी एज वेल एज उसका मेलिंग डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए हम ऑप्शन R यूज़ करते हैं. तो लेट्स क्रिएट अगेन यूज़र add user Amit. Okay, so what it does, okay, so let's see if the user is getting created. Yes, user is created. So now we want to delete the user del -r option user Amit. Yes, so the user delete command did not found this mailing directory. Okay, but what it does, it deletes his home directory. So there is no home directory called user Amit. Okay, so this user will be deleted from Linux. Okay. Now let's see next. सो नेक्स्ट क्या है कि पासवर्ड कमांड कैसे यूज़ करते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं. तो पासवर्ड कमांड को यूज़ करने यूज़र का पासवर्ड क्रिएट करने के लिए passwd कमांड रहता है एंड उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे कि उसका स्टेटस देखना है तो कैपिटल S से देख सकते हैं. यूज़र को लॉक करना है तो स्मॉल l से लॉक कर सकते हैं. उसको अनलॉक करना है या फिर डिलीट करना है तो u स्मॉल d से कर सकते हैं हम. तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा कि स्टेटस हमको देखना है तो हमको पहले एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं. उसके लिए यूज़र ऐड -d/home/sumit. okay, /m यूज़र का नेम सुमित. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड द यूज़र नेम सुमित एंड उसका होम डायरेक्टरी क्रिएट किया है /home/sumit. ओके, तो हम अभी इसको पासवर्ड भी सेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड कमांड. ओके, passwd कमांड, passwd एंड यूज़र का नाम जिसका हमको पासवर्ड सेट करना है. ओके, सो आई एम सेटिंग द पासवर्ड. So it gives me the warning that password is shorter than 8 character. So you can set the password shorter than 8 character while forcing, but it is recommended that you have to use the strong password. Okay, so this is the training video, so I am creating the short password for it. Okay, so I have created the password. Okay, where I have set the user password. नाउ अभी हमको स्टेटस चेक करना है तो हम कैपिटल S यूज़ कर सकते हैं passwd कमांड के साथ. ओके, कैपिटल S, क्या नाम है यूज़र का, अमित, सुमित. ओके, सो वी कैन चेक द यूज़र स्टेटस. एंड नेक्स्ट इज स्मॉल l, हाउ टू लॉक द पासवर्ड. अगर मुझे पासवर्ड लॉक करना है तो कैसे लॉक कर सकता हूँ, तो हम चेक करते हैं passwd के साथ -l लगाएंगे Sumit ka user. Okay, so password is now logged. If we check the status of the password, so here we can see the capital L, the password is logged. So when I try to log in with the Sumit user, so I have logged into the Sumit user. So let's passwd.
Okay, so try to change the password. So it is not going to change because password is logged. So authentication token multiple errors, so it is giving me the error क्योंकि हमने पासवर्ड लॉक करके रखा है. इफ़ मैं पासवर्ड अनलॉक करता हूँ यूज़ है, so I have changed the password setting. So if I check the password is P now, so it is unlocked. If I change the if I want to change the password of Sumit, now I can change it. So yeah, you can see the new password is shown and अभी मैं यहाँ पे नया पासवर्ड डाल के इसको पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ. जैसे कि मुझे इसका पासवर्ड चेंज करना है एंड मुझे यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, तो मुझे पासवर्ड बड़ा सेट करना पड़ेगा. So password is changed successfully because the password is not logged. Okay, so if I want to delete the password, simply pass the D option and the password will be deleted. So when I check the status, so there is no password will shown here. Okay, so if when I logged into this user, so there is no password and it can directly log me in. Okay, so if I want to set the password, so I can set the password from here. Again, okay, so now when I try to log in with this user, okay, so trying in new terminal, so Sumit, so it will ask me the password. If I put it wrong, so it will give me that authentication failure. If I try to correct password, then it will give me the login. Okay, this is how we can set the password and check the status of it. Okay, so let's see the next is password aging. Password aging information can be listed or changed with chage command, change command. Okay, so let's see an example of password changing. So password aging, where we can change its age, expiry date, when to expire, and how many days prior, then it will show the us warning. Okay, so chage Sumit, so it is asking me the minimum password age, so I can set minimum password age of the user, so I will set 5 days. So maximum password age, so maximum password age of the user will be 10 days. The last password change date should be current. Expiration warning before 7 days or before 2 days, I can say before 2 days. Okay, so password inactive day should be 1 day prior. Okay, so account expiry date should be also 1 day. So now we have set its aging. Okay, so we have set the password aging of user Amit. So now we can check with the pass wd -s Sumit. So we can see here that the output is changed now. So we have set the minimum password age for this is 5 and maximum password age is 10 days. Okay, so password expiration warning should be 2 days. Okay, so password inactive period should be -1 before the warning. Okay, so this is how you can change password aging. Okay, so you can also check the -l option using change command to check when the password is changed. Okay, last password change, when the password is it is expiring May 7 2023 after 10 days. Okay, password inactive period will be never. Okay, account expire will be never. Minimum number of days between password change, so 5 days. Okay, so maximum number of password change will be 10 days. Okay, warning,
before password expires is 2 days. Okay, so this is how you can use the change command to set the password aging. Okay, so let's see next. So next is manage group. How can we manage groups? Okay, so first we can see the how to create a group कैसे create किया जाता है, and उसके options क्या है. उसके options है G और R. जी से हम जी आई डी सेट कर सकते हैं ग्रुप का, एंड आर से हम सिस्टम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं. ओके, जैसे कि हम यूज़र सिस्टम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं हाइफन आर ऑप्शन से, वैसे ही हम हाइफन आर ऑप्शन से सिस्टम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो हम चेक करते हैं कि ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है. तो एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं. ग्रुप. ओके, सो ग्रुप, लेट्स से ग्रुप कॉल्ड animals. Okay, so sorry, group add command, so it will add the group to the system with the animal name. Okay, so group is created. Okay, so now if you want to check the group, how can we check the group is created or not? So we can cat slash etc gr file. Okay, so here you can see the animal group is created. Okay, so user group Sumit, group 1. Okay, so these are the groups are present, so its uid is the gid is this, so we can change it using -g. So we will create another group with the -g option. Okay, so we will set the 4. Okay, so group called birds. Okay, so we can see here it will set the group id is 1004. If I need to modify this, so group -g, so I need to change this, so it will be 2005. So let's see if it is changed. So you can see here that it is changed. Okay, so group mod is used to modify the group. Okay, and group add is used to create a group. Okay, ओके, सो नेक्स्ट इज़ मॉडिफाई ग्रुप. ग्रुप को मॉडिफाई कैसे करते हैं? हमने देखा कि ग्रुप मॉड कमांड से हम ग्रुप को मॉडिफाई कर सकते हैं. ग्रुप का नाम चेंज करना है तो हाइफन एन स्मॉल एन लगता है, एंड उससे हम ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं. ग्रुप का जी आई डी मॉडिफाई करना है, ग्रुप आई डी मॉडिफाई करना है तो हम स्मॉल जी से मॉडिफाई कर सकते हैं. ग्रुप को डिलीट करना है तो ग्रुप डेल कमांड यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो I want to delete the group which is group del. Okay, group del birds. So let's cat slash etc group. So there is no bird available now. Okay, so this is how you can delete the group as well. Okay, so let's see next. So next is manage group password admins and members. Okay, so manage group को मैनेज करने के लिए जी पास डब्ल्यू डी कमांड रहता है. जैसे ही यूज़र का पासवर्ड मैनेज करने के लिए पास डब्ल्यू डी कमांड रहता है, वैसे ही ग्रुप का पासवर्ड मैनेज करने के लिए, उसके मेंबर्स एडमिन्स मैनेज करने के लिए जी पास डब्ल्यू डी कमांड रहता है. ओके, सो बेसिक एग्जांपल आई कैन से दैट व्हाट्सएप ग्रुप वी हैव, एक ग्रुप रहता है जिसमें एडमिन्स होते हैं. ओके, उसके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं. ओके, जो कि मेंबर्स भी एडमिन रहते हैं उसमें, और हम अलग से मेंबर्स ऐड करते हैं उसमें जो एडमिन नहीं रहते, बस वो ग्रुप के मेंबर रहते हैं. ओके, तो इस तरीके से लिनक्स में भी एक ग्रुप रहता है जिसके अंदर हम यूज़र ऐड कर सकते हैं, उसका एडमिन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मेंबर्स ऐड कर सकते हैं. ओके, सो ये सारी चीज़ें करने के लिए जी पास डब्ल्यू डी कमांड यूज़ की जाती है. ओके, सो जी पास डब्ल्यू डी के ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? स्मॉल ए है, स्मॉल डी है, कैपिटल एम है, कैपिटल ए है. सो फर्स्ट इज स्मॉल ए. स्मॉल ए इज़ यूज टू
ऐड द यूज़र टू द ग्रुप। ओके, तो कोई भी यूज़र है उसको ऐड करना है कोई भी ग्रुप में, तो हम हाइफन ए का यूज़ करेंगे, हाइफन स्मॉल ए का यूज़ करेंगे। ओके, और ग्रुप में से कोई यूज़र को डिलीट करना है तो वो स्मॉल डी से होता है। ओके, मल्टीपल यूज़र ऐड करने हैं ग्रुप में तो कैपिटल एम से होगा। ओके, किसी ग्रुप का एडमिन बनाना है किसी को तो वो कैपिटल ए से होगा। ओके, सो लेट्स सी दीज एग्जाम्पल्स। Okay, so these examples, so we have created the group called animals, group. So we have created this group animal. Okay, so we will add the user to this group. So user Sumit will be adding to this group. Okay, so you g pass wd hyphen a user Sumit is adding to animals. So adding user Sumit to group animal. Okay, so let's see if the group is added to the animal or not, user is added to the animal group or not. Etc g, we can also check in g shadow file, as well as we can also check in groups. Okay, so here you can see the user. Okay, so now the next is how can we delete the user or multiple users can be added to the group. So let's add multiple users to the let's add the multiple user to the group using group add in g pass wd command capital M user Amit comma root. Okay, to the animal group. So multiple user is added. Let's cat etc group. So here is Amit as well as user root, creating a admin for this group. Okay, so admin, so we need to create a admin for the group. Okay, so how can we create with g pass wd command, pass wd hyphen a Sumit will be admin of animal user animal group. Okay, so let's cat slash etc pass sorry group. So in this you cannot see if it is admin or not. So let's check in g shadow. Here you can see the admin group. Okay, here you can see the admin group and the members of the group. Okay, so animal is the group. It has no password. Okay, so it has admin user and its members. So this is how you can use the gpasswd command. Okay, explanation of this options. So options of gpasswd can be used below. So the options are which we used, the first is small a, which is used to add the group, okay, user to the group, and d is delete user from the group. Capital M is used for multiple user adding to the group, and capital A is used to add the administrator user to the group. Okay, so we have used all these options. So we will see you in next session. Thank you.